Hello everyone, I'm Dr. Rajpal, and in this video I will discuss a word with you with its synonyms, antonyms and its uses. So the word is on your screen. It is peevish. So peevish is an adjective and it means easily annoyed by unimportant things or bad tempered. अनइम्पोर्टेंट थिंग्स को लेकर अगर आप जल्दी से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, सो जाहिर तौर पे यू आर ए बैड टेम्पर्ड पर्सन, और उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज पेविश. हिंदी में इसका मीनिंग होता है चिड़चिड़ा या झगड़ालू. और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं इरिटेबल, ग्राउची, क्रॉस, टेस्टी, पेटुलेंट. ये इसके सिनोनिम्स हैं. लेट मी रिपीट द synonyms once again. Petulant, P-A-T-U-L-A-N-T, testy, T-E-S-T-Y, cross, C-R-O-S-S, grouchy, G-R-O-U-C-H-Y, irritable, I-R-R-I-T-A-B-L-E. So ये इसके synonyms हैं. उसके बाद में आते हैं इसके एंटोनिम्स पे. तो जो झगड़ालू है उसका एंटोनिम होगा फ्रेंडली, एमिकेबल, जेनियल एंड प्लीजेंट. फ्रेंडली जो मिलनसार है, प्लीजेंट खुशनुमा है, एमिकेबल इज ऑल्सो फॉर अ पर्सन हु इज हैविंग गुड सेंस while dealing with other people. एमिकेबल जो मिलनसार है, जो सोशिएबल है. जेनियल, और इसका एग्जाम्पल एक क्रिएटिव यूसेस में देखते हैं. पेविश पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम स्टार्टेड टू क्विरल विद रोहित शर्मा ऑन फील्ड. फील्ड पे रोहित शर्मा से पेविश पाकिस्तानी कैप्टन बाबर आजम झगड़ने लग गया. तो उन्होंने अपील किया और एम्पायर ने आउट नहीं दिया, तो ही स्टार्टेड टू क्विरल विद रोहित शर्मा. So that's the picture that I have taken up in the thumbnail in only in order to explain to you how you can make a very interesting sentence. I keep accentuating on this fact repeatedly, that whatever word you learn, try to use that word in a creative sentence. Because the moment you allow the creative faculty of your mind to compose a sentence in the contemporary context, that contextualization helps you to keep that word for longer in your mind. So that's all in this video. If you like the way I explain the words, and particularly the words I have explained in terms of or in context of cricket, like forward fans and now Peevish Pakistani Captain Babar Azam, please subscribe the channel if you are new on this, and stay connected with me, Dr. Rajpal, on this wonderful platform tag that is transform and empower through communication. Thank you so much for watching this video.